Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today's video is something interesting. मैंने कुछ शुरू किया है थोड़ी देर पहले जो मैंने सोचा कि अब मुझे YouTube पे भी ये पूरा चार्ट करना चाहिए because it's very exciting for me to share with you guys. मैं जितना भी कंटेंट अभी हम शेयर कर रहे हैं हमें बिल्कुल थोड़ा अरसा हुआ है पर वो आप सब ने इतना अप्रिशिएट किया है, इतना सपोर्ट किया है, तो आई फील लाइक इन द शेयरिंग ऑफ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू पर्सनली एंड इवन प्रोफेशनली it's been a great journey. So what I want to talk about today is that I have kind of gone back on to my health journey. जैसे आप सबको पता है last year मेरी baby हुई, which was one of the best things that ever happened to me. But at the same time baby को पैदा करने के बाद there was a whole process, right? So मैंने अपनी pregnancy में about 8 kilo gain किए थे in total, which is not a lot. Like even during my pregnancy everybody was like, wow, you haven't gained a lot of weight, and you know I ate well and I was very active, but come after the pregnancy जो आपको कोई नहीं बताता कि pregnancy के बाद actually is when you have that stress of late nights and you know you're not being able to take care of yourself. बिल्कुल मेरा जो center था I felt completely went off, you know. I gained an additional almost, you know, I would say about 10 kilos, you know, after that. So it wasn't so much my pregnancy that I gained weight in. I gained weight more after because एक तो pregnancy के बाद baby के बाद जब baby हो गया उसके बाद जो सब होता है, दूसरा कोरोना का ये पूरा एक स्ट्रेस था. मेरा बहुत छोटा बेबी था, मैं बहुत एंक्शस थी, हम सब घर में थे, तो जो चीज़ें मैं नहीं भी खाती हूँ इन जनरल वो भी खानी शुरू कर दी. अच्छा खाना भी खाया, घर का खाना खाया, बट देयर वाज a lot of cake as well. Yum by Amna, I love you, but I ordered so many of those chocolate cakes and actually ate them, and I kept having people send me food. So by the beginning of this year when Noor turned 1, I kind of felt कि कुछ करना चाहिए, पर फिर भी ऐसी कोई ख़ास motivation नहीं थी, which is the honest truth. Slowly we started to get out, you know, Noor's play school started, etc., whatever, and I realized that I've completely become a different person physically. I was so disconnected, बहुत disconnected थी अपनी body से and बहुत disconnected feel कर रही थी. So around March, end of March, I felt that now I really need to get serious about getting my health back. I don't really care about what I look like. My husband doesn't either. मैं चाहे मोटी थी या पतली हूँ, या मैं मोटी is actually the wrong word, but bigger, thinner, moti as people call it or whatever. My husband's loved me throughout all my phases. It's not about my husband. It's not about anyone else. It was about me, you know. And I felt कि जैसे जैसे नूर और एक्टिव हो रही थी, मेरा उसके साथ एक्टिव रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था because my weight was coming in the middle of that. And if you guys have been following me for a while, you know that I've always, you know, had a relationship with my body and weight. I've had to, you know, be healthy and take care of it. तो वो मैंने इतना छोड़ दिया था that I realized कि जो उसके पीछे भागना, उसके साथ, you know, 10 काम करना मुझे मुश्किल लग रहा था. I didn't like that. प्लस एक और चीज़ जो मैं हमेशा करती थी, एक तो मैं बहुत नूर की, you know, by the time I got married etc, for years I had been on a plan and you know मैं अपने सारे blood tests हमेशा चेक कराती थी. I was fit, I was moving, so I felt कि मुझे वो feeling वापस, I wanted to gain that feeling. I don't want to be slow and sluggish. I wanted to be energetic. एक तो वो बहुत सख्त motivation थी. Second motivation ये हुई कि मेरे पैर में एक कॉर्न निकल आया. सो रोज़ जब मैं चलने की कोशिश करती थी, दैट कॉर्न वुड बग द हेल आउट ऑफ मी बिकॉज इट वाज सो पेनफुल. तो उससे और भी मेरी बॉडी स्लो हो गई क्योंकि मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था एक्सेट्रा. एंड आई फेल्ट कि ये मैं क्या कर रही हूँ. लाइक आई एम नाउ गेटिंग टूवर्ड्स मे बी गेटिंग सिक, एंड दैट्स माई अल्टीमेट, जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो ये है कि मैं बीमार नहीं होना चाहती. मैं मेरी फैमिली में, यू नो, हार्ट डिजीज़, diabetes, high blood pressure. Generally, I think desi families that tends to be the norm because our eating habits aren't great and we don't exercise enough. But that is what I'm really scared of. You know, I have a little baby. I want to be healthy for her. ये मेरी बहुत बड़ी motivation थी. बहरहाल मुझे मालूम था कि मुझे करना क्या है क्योंकि ये पहले मैं कर चुकी हूँ. मैंने अपनी wedding के around in 2017 I was my fittest. And then even after that, you know, I
kept it off, etc. whatever. And for years now, since I would say 2011 is when my journey started of losing weight and getting healthier. And I was really there, etc. And then pregnancy kind of completely for a while threw me off, and I think that's okay. I realized कि मैं पहले कर चुकी हूँ तो मैं कर सकती हूँ. तो मेरे जो टूल्स हैं वो मैं शेयर करूँगी. ये सारी जर्नी आई एम गोना ट्राई टू डू अ हेल्थ अपडेट एवरी वीक. नाउ इट्स गोना बी अ वीडियो दैट गोज अप एवरी वीक. तो मैं आप लोगों को एवरी वीक, इफ़ नॉट एवरी 2 weeks, आई एम गोना ट्राई टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट इंशाल्लाह. तो इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने अभी तक क्या किया है. आई हैव ड्रॉप्ड वेट. आई हैव नाउ ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 6 kilos. And I'm doing it in a very healthy manner. I'm not rushing. At the same time, I've realized कि कुछ चीज़ें, especially जहाँ दिमाग, सबसे पहला जो आपका टूल है जो आप यूज़ करते हैं, जो मेरे टूल्स में टूल है, वो है कि मैं अपने दिमाग में ये एक डिसीजन बना लेती हूँ कि बस अब मेरा टाइम आ गया है टू बी हेल्दी एंड गेट फिट. जो मैंने अभी तक नहीं किया था. मैं करती थी, फिर नहीं करती थी, करती थी, नहीं करती थी, फिर लूज़ किया, गेन कर लिया. इन दिस टाइम आफ्टर बीइंग हैविंग नूर. सो सबसे पहले माइंड बनाना था कि मैंने सबसे पहले फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, बिकॉज एंड एवरीबडी लव्स टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि वज़न कैसे कम करना चाहिए, आई फील, या हेल्दी कैसे होना चाहिए. सबसे पहले आपका माइंड सेट, आपका जो माइंड है उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लेके आना है. आई एम ग्लैड कि मैंने कोई रश नहीं किया बेबी के बर्थ के बाद कि मैं कोई अननेसेसरी स्ट्रेस लेती. इट्स फाइन, डजंट मैटर. आई हैड अ बेबी, इट्स बिग डील. आई नीडेड दिस टाइम टू रिकूपरेट एंड ईट एंड जस्ट do all the stuff that I had to do. But the first thing I did was I got help from my sister who does a lot of mind body work, and it's not conventional therapy. It actually has a lot to do with releasing any trauma that you hold in your body. Just going towards that journey. अपने जो मेरे, क्योंकि a lot of people, especially if you're like me, I'm an emotional eater. If I'm emotional, if I'm going through something, my weight does fluctuate, and I will eat or I will make the wrong decisions. So I knew कि जो सबसे पहला एरिया था वो मैंने वो टैकल करना था कि मैं अपने दिमाग को क्या क्या मेरी इश्यूज़ हैं, मुझे क्या इमोशनल अभी फ़िलहाल फीलिंग्स आ रही हैं, क्या ट्रॉमा है, एक्सेट्रा. सो आई गॉट हेल्प फ्रॉम हर. आई पुट हर डिटेल्स. They'll come up here right now. You guys can get in touch with her. She is unbelievable, not just because she's my sister, she's also the person who runs this entire Natasha Global in general, but she's also a Reiki, yoga, she does mind body work as well. She's amazing. And you have to actually work with her to know what I'm talking about, because I feel कि जब मैंने सबरीना के साथ वो काम किया तब मैंने सही डिसीजन बनाया कि अब मैं बस अब now it's time to get healthy. Because I released a lot of the sadness as well, a lot of the trauma that also happens after having a baby, because it's so much like being lost. Like even today I'm like, manual kahan hai to do all of this stuff, right? So that helped tremendously, because that made me feel like okay, I need to clear things, feel better. कि जो अगर आपका इमोशनल एस्पेक्ट अगर आप हैंडल कर लें तो इससे बेहतर आई थिंक हेल्दी रहने की टिप कोई नहीं हो सकती. हम मोस्टली अनहेल्दी डिसीजंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अंदर से लोनली होते हैं, या सैड हो रहे होते हैं, या ट्रॉमा होता है. And this doesn't even have to do with big things that happen in life. If you see my life externally, it's fine. But I battle with a lot of stuff internally. And hence, I got help with Sabrina, which was amazing. That was step number 1. तो सबसे पहला जो टूल मैं आप लोगों को कहूँगी is कि deal with the mental and emotional side of your body before you start to tackle the physical side. That's one of my best advices and tools. Secondly, I was like, okay, I'm going to start now sleeping early and waking up early. Waking up early तो मैं करती हूँ, वैसे भी करती थी, और नूर की वजह से तो कोई देखिए 7:30 we are up. But what I would do is that I would really sleep late also. तो मैं काम बहुत लेट तक करती थी, फिर मैं सुबह फिर भी उठ जाती थी. जब आप कम सोते हैं तब भी आप सारा दिन गलत डिसीजंस बनाएंगे. यू विल वांट स्वीट एंड कार्ब्स, तो आप मीठी चीज़ें खाएंगे, या रोटी चावल. यू विल क्रेव दोज थिंग्स क्योंकि आपकी बॉडी में योर बॉडी इज़ नॉट वेल रेस्टेड. अ वेल रेस्टेड बॉडी कांट बी हेल्दी. सो sleep became one of my other things. Maximum by 11 o'clock
आई एम स्लीपिंग। और मैंने अपनी अभी एक साइकिल बना ली है, तो दैट्स रियली डन मी वेल। कभी कभी ठीक है अगर मैं बाहर जाऊँ या अगर मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, every now and then I'll have a late night, but in general, on an average, I sleep by a certain time, which is about 10:30, 11, and then I'm up by 7:30. ये भी आपने ज़रूर करना है, because sleep से भी related बहुत सारे issues हो सकते हैं, weight gain हो सकता है, you don't perform as well, you know. There's so many things, disadvantages of not getting good rest, and I've seen that the minute I get good sleep, मैं next day better decisions बना सकती हूँ, काम की भी, personally भी, food wise भी. So that was tool number 2. Number 3, I did the one thing that I've always done when I've really been on a health kick, and that is to add more fruits and vegetables to my diet. जितना भी plant based खाना मैं खा सकूँ, raw, not cooked, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक हम सब्जियाँ बनाते हैं तो वो कोई भुनी हुई मुर्गी बनाए या भुनी हुई भिंडी बनाए या भुनी हुई तोरी बनाए, which all the I love that food, but I feel के रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं उसको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता. तो जितना मैं कर सकती हूँ, कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ गाजर सैलड, एक जैसे गाजर, क्यूकम्बर, टमाटर, प्याज, नींबू के साथ उसके अंदर चने डाल के आप एक अच्छा सा सैलड बना सकते हैं. यू नो, आप इतनी सारी वैरायटीज़, हमारी इतनी सब्जियां हैं और फ्रूट है जिसको आप चाट की तरह. आई लव डूइंग दैट. आई मेक बिग बोल्स ऑफ लाइक, यू नो, अ नाइस फ्रूट salad, or I'll make like a salad and I'll keep having a lot of that. Secondly, what I do with fruits and vegetables is कि उनको जूस भी करती हूँ. मैं जूसिंग रेसिपीज़ भी अब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो मैं डेफिनेटली रोज़ पीती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है. बिकॉज जूस से अगर आप प्लांट्स, सब्जियाँ और फ्रूट इतना ज़्यादा खाना भी कभी कभी मुश्किल होता है. जूसिंग में क्या होता है कि वो आसानी से आपके पास लिक्विड फॉर्म में रेडी होते हैं. यू कैन जस्ट ड्रिंक इट एंड गेट ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स. उससे क्या होता है, बिकॉज आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बेहतर मीट कर रही होती है, तो आपकी बॉडी लेस जंक को क्रेव करती है. So that was another thing that I started to do. I was like, okay, I'm going to go ahead and make a decision to have more fruits and vegetables into my diet. That's another really big thing with me that works with me each and every time. So the next thing that I did, that I always talk about and I get a lot of flack for when I talk about it on social media, is that I have about 4 liters of water a day. ठीक है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी किडनीज के लिए सही नहीं है, इसके लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है. इस गर्मी में, स्पेशली इस गर्मी में, जो अभी इतनी गर्मी, इसलिए मेरा मुंह भी चमक रहा है बिकॉज इतनी गर्मी है. इस गर्मी में और जनरली भी मेरी बॉडी के लिए 4 liters ऑफ वाटर इज़ ग्रेट. इफ़ आई कैन हिट दैट, देन आई अगेन मेक बेटर डिसीजंस विद फूड. मेरी स्किन बेहतर होती है, बाल मुझे बेहतर लगते हैं. यू नो, आई फील लाइक कि आई एम मोर सेशिएटेड इन द फैक्ट दैट माई टमी, आई डोंट मेक. कभी कभी एक और सिग्नल, आपको भूख लगता है पर वो होती नहीं है, वो है थर्स्ट. कभी कभी आप सिर्फ को प्यास लग रही होती है पर आपको लगता है भूख लग रही होती है और आप खाना खा लेते हो. So 4 liters of water for me really works. Now for everybody, because a lot of people will, सबसे पहले of course, like I will tell you guys कि always consult a doctor, your physician, before you start any plan, any different thing that you want to do. But if you're someone who has 1 glass of water a day, when you hear me say 4 liters of water, तो आप शायद एक और ग्लास पी सकते हैं एक दिन में. मकसद ये नहीं कि आप फ़ौरन वही करें जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को, इसको इट्स अडेप्टेड टू इट, और एक आदत पड़ गई है. तो आप लोगों के लिए, जो जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ किसी को करते हुए देखती हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करती हूँ. कोई ये नहीं बोल रहा कि आप कल 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दें, पर पानी पिएँ, क्योंकि आई फील अ लॉट ऑफ पीपल जनरली पानी हम लोग कम पीते हैं. पानी को आप फ्लेवर भी कर सकते हैं, आप लेमन डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं. अनदर वे आई लाइक टू गेट माई लिक्विड इनटेक, स्पेशली नाउ डेज, बिकॉज यू नो आई एम trying to be healthy, is to constantly keep flavored water as well. That's something zingy as well. Ginger डाल लें, lemon डाल लें, उससे एक जिंग आ जाता है पानी के अंदर. और जिनको of course constantly आप सिर्फ पानी नहीं पीना चाहते, तो then it's nice to also have flavored water. The next thing that I'm doing, which I would tell everybody to incorporate, in case you are not, if you're vegetarian, etc., vegan, you can skip this, but I have broth, but you can even have vegetable broth. If you're vegetarian and vegan, आप लोग वेजिटेबल ब्रॉथ भी पी सकते हैं. मैं अभी फ़िलहाल देसी मुर्गी की
यखनी पीती हूँ रोज़, एटलीस्ट 1 से 2 कप पीती हूँ, क्योंकि मैंने कॉफ़ी गिव अप की हुई है. अब मैं कॉफ़ी बहुत पीती थी in moderation. I think coffee is fine, but I also feel for me my skin starts to not look as good. I feel कि मुझे again रात में सोने में बहुत difficulty होती है जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ. My skin gets affected, you know. I feel कि मेरा जो digestive system है वो भी gets affected by coffee. तो मैंने कॉफ़ी बिल्कुल अभी बंद की हुई है. उसको रिप्लेस करने के लिए मैं ब्रॉथ पी रही हूँ. तो एक इट्स अ हॉट ड्रिंक एंड इट्स टेस्टी. एंड अगर अच्छी घर में बनाए, मेरी अम्मी रोज़ बनाती हैं मेरे लिए, तो अम्मी तो बहुत ही अच्छी यखनी बनाती हैं, तो वो पिएँ. वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है टू गेट to get yourself on track. And also it has great, like it has collagen, it has all this goodness as well. It's bone broth. So I would recommend yakhni as well. So that's another thing that I'm doing right now. क्योंकि मेरे पैर में अभी फ़िलहाल कॉर्न निकला था, फिर मैंने रिमूव करवाया, तो इट वाज अ सर्जरी जो मैंने पैर पे कराई. उसकी वजह से मैं अभी भी काफ़ी मैं तकलीफ़ में ही हूँ, क्योंकि वो हील हो रहा है. तो मैंने अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं की, पर मैं वैसे भी अगर एक्सरसाइज शुरू भी करती या करूँ तो मैं कभी एकदम जाके, हम लोग क्या कहते हैं, जाके एक दिन इतना भागते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि फिर 3 साल एक्सरसाइज नहीं करते. So the trick is to go slowly. My trainer is Power by Komal Malik in Karachi, and again I will put her number here if anybody is interested in getting in touch with her. She is going to train me and we're going to do this together. She's the one who I had initially done it with as well when I had lost weight, and she's been my trainer in Karachi, so she knows my body. And she is not one of those trainers that is mean, because I don't like mean trainers. She is a friend, and now she is someone who really encourages me. So I want to start very slow. मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर में शुरू की. I love dancing. So not that I can dance on this foot, but I'll move a little bit. थोड़ा सा और एक्टिव होना. नूर के साथ कुछ ना कुछ होता है दिन में, हम कहीं जाते हैं, पार्क जाते हैं, उसकी क्लास में जाते हैं, या कोई डांस, उसकी भी डांस क्लासेस हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो आई फील लाइक उसकी कोई एक्टिविटी होती है, वी डू दैट. सो द आइडिया, और आई एम बीइंग माइंडफुल कि एटलीस्ट मैं जितना चल सकूँ घर में मैं चलूँ, और मैं सेडेंट्री ना रहूँ, कि मैं टीवी के सामने ना बैठे रहें या कॉन्स्टेंट ना बैठे रहें. कोशिश करें हर घंटे के बाद आप थोड़ा सा चलें, चाहे आप किचन तक जाएं और किचन में जाके कुछ गलत ना खाएं, पर थोड़ा सा फिरना चलना, बॉडी को थोड़ा सा यूज़ टू करना, बिकॉज ये एक पूरी जर्नी है. इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ. मेरा कोई ये प्लान नहीं कि आज महीने में ही मैं आज 20 किलो गिरा दूँगी और फिर कल मैं 30 किलो गिरा दूँगी और फिर सारे किलो गेन कर लूँगी, बिकॉज बहुत जल्दी हुआ है. ये एक एटलीस्ट एक साल का प्रोसेस है, आई नो, ऑफ वेट लॉस. और फिर उसके बाद, वेट लॉस के बाद, आई वांट इट टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. Another thing that I've incorporated into one of my other tools is intermittent fasting, which means कि मैं, और intermittent fasting है कि आप एक particular period of time के लिए बिल्कुल दिन में कुछ भी नहीं खाते. आप पानी पी सकते हैं, पर आप कोई भी कैलोरी वाली चीज़, लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, but I'm not a fan. I feel that it should be I don't feel कि the first thing that should go into your tummy is black coffee. When you wake up, I don't think it's, personally, मेरी अपनी opinion है और मेरी अपनी belief है that it's not a healthy thing to put first thing in the morning into your body. So I feel पानी पीना चाहिए उस दौरान, और फिर आप उस फास्ट के बाद खाना खाते हैं. लोग डिफरेंट विंडोज़ फॉलो करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की. मैं 16 आवर्स फास्ट करके 8 घंटे खाना खाती हूँ और फिर 16 आवर्स फास्ट होते हैं. इसका मतलब कि मैं यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज़ कि मैं अराउंड 10 o'clock शुरू करती हूँ अपनी फास्टिंग विंडो, और मेरी 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है. अगर कभी मैं 11 बजे शुरू करूँ फास्टिंग विंडो, तो आप मतलब कि उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट मैं अराउंड आई लाइक टू एंड इट बाय 7 o'clock. तो अगर मैं मैक्सिमम लेटेस्ट में 11 बजे अपना नाश्ता दिन शुरू करूँगी या ब्रेक माई फास्ट, और फिर मैं अराउंड 7 o'clock तक मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं 11 बजे तक सो रही हूँ. एंड आइडियली आपको अपने खाने और सोने के टाइम के बीच में अराउंड 4 घंटे छोड़ने चाहिए. उसकी वजह से भी जब खाना अच्छा डाइजेस्ट नहीं होता, फ़ौरन खा के आप सोते हो, एक तो calories, all of those calories are going to get converted into
नॉट वेरी हेल्दी कैलोरीज. सो यू वांट टू डेफिनेटली ट्राई टू गिव दैट गैप कि आपका बॉडी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके, कि आपको सोने में भी आसानी हो. आई फील कि मुझे बहुत एसिड रिफ्लक्स होता है अगर मैं सोने के टाइम के पास खाना खा लूँ. तो मैं 7 o'clock तक अपना खाना पीना रैप अप करके I'm done. So I'm following that intermittent fasting window, which is something that I've realized that my body is working very well with right now. और आप लोग भी हेल्दी भी है कि आप सुबह, lot of people also do intermittent fasting, पर वो 2 बजे दोपहर को शुरू करके रात के 10 बजे तक खाना खाते हैं. आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि 7 बजे बहुत जल्दी है. बट आई फील, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के साइकिल को भी अच्छी तरीके से एक तरह से रिजुविनेट करना चाह रही हूँ एक्सेट्रा, मुझे ये सूट करता है कि मैं जल्दी खा के जल्दी सुबह अपना भी खाना relatively जल्दी शुरू करूँ. although you know some people eat very early in the morning. I'm not a person who can really wake up and eat either. I can't do that. तो मैं I prefer कि कुछ घंटे पानी ही मैं पीऊँ, एक मेरे अच्छा सा सब कुछ flush out हो जाए. I feel like all toxins etc. And then I start my day, और मैं intermittent fasting भी कर रही हूँ. That's another thing that I'm incorporating in one of my tools to be on this health journey. A lot of people ask me, because initially, like years back, I would say over a decade back, I was almost 120 kilos. I was really, really big. So a lot of people ask me how do you lose the weight, etc. whatever. So it was a long journey. And it took its time, so I'm in no rush. And I feel that's the other advice I would give is कि please अपनी body को किसी की शादी के लिए, किसी के लिए, अपने husband के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी भी दुनिया के इंसान के लिए वज़न मत कम करें. वज़न सिर्फ अपने लिए कम करें, healthy सिर्फ अपने लिए हो, ये बहुत ज़रूरी है. Another really big advice to give कि आपने अपने लिए करना है. और ये sprint नहीं है, ये marathon है. तो आपने इसको रियलाइज़ करना है कि आपने सारी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें करनी है. तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए भी दिस इज़ अ वेरी बिग लेसन. अनदर थिंग दैट आई डिड फाइनली वाज दैट आई वेंट अहेड एंड गॉट माय इंटायर चेकअप डन. ठीक है, मैंने यहाँ आगा खान में चेकअप करवाया था. एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है, वील पुट ऑन द स्क्रीन के क्या क्या टेस्ट्स उस एग्जीक्यूटिव चेकअप में कवर होते हैं. ऑफ कोर्स यू गाइस, लाइक आई सेड, अपनी फिजिशियन से कंसल्ट करें. मैंने एक्चुअली किसी भी कंसल्टेशन के बगैर, बिकॉज वो एक एक्चुअल फुल बॉडी बस चेकअप होता है, उसमें और कोई घबराने वाली इस तरह की बात नहीं है. तो आप मैं आखान से अपॉइंटमेंट ली, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ जाते हैं, आपका ब्लड वर्क अप होता है, आपकी ECG होगी, आपका आई ऑप्टेड टू गेट माई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डन एंड ऑल्सो टू गेट अ पैप स्मेयर. ये भी दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एज वुमेन जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डिफरेंट कैंसर से भी अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली पता चल जाए, तो आप और भी आसानी से इनको इंशाल्लाह आप हेल्दी रह सकते हो और आपको ये इफेक्ट नहीं करता अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए. हम में से बहुत सारे के लेट डिटेक्शन होती है. वैसे भी किसी भी बीमारी की हम लोग के यहाँ हम सिर्फ तब ब्लड टेस्ट कराते हैं जब हमारी तबीयतें ख़राब होती हैं. बट आई फील वंस ए ईयर एक फुल बॉडी वर्कअप बहुत ज़रूरी है. तो आखान में यहाँ प्रोविज़न है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी भी अस्पताल में डेफिनेट प्रोविज़न होगी. वरना आप ये टेस्ट देख सकते हैं, अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करानी चाहिए. इसमें कुछ चीज़ें मैं CBC होनी चाहिए. आई इवन टेल यू व्हाट आई फील शुड बी डन. CBC चेक करने चाहिए, आपके ग्लूकोज फास्टिंग, आपके शुगर के लेवल्स, आपके थायराइड का पूरा पैनल वो कराना चाहिए. CBC में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी हो जाती हैं. एंड यू एंड अप गेटिंग आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका वेट चेक करते हैं, आपकी हाइट चेक करते हैं, लाइक आई सेड ECG होगी, चेस्ट एक्सरे भी होता है, इसमें इंक्लूडेड है. तो इन सब चीज़ों को भी मैंने कराया और मैंने अपना एक अगेन चेक किया कि मेरी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है. तो वो सब लेवल्स चेक किए मैंने. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन. But of course, like I said, definitely need to lose the baby weight because even health-wise, it's not great to carry it for very long. But again, slow and steady. The other thing that I got done, जो अब साउथ सिटी में लोग अवेलेबल है, वो है कॉरोनरी आपकी कैल्शियम स्कोर वो चेक कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट टेस्ट टू गेट डन क्योंकि वो आपके एक मशीन में सिर्फ आप अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और उसमें आपको बता सकते हैं कि आपके हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं
उसमें कितना कैल्शियम स्कोर है, arteries. I mean, it basically is a marker for heart disease. How much, are you potentially getting prone to it? So it's like a good wake-up call. Alhamdulillah, my calcium score was 0 right now, but of course I'm still younger. As we age, age से भी बहुत सारे levels high होते हैं, even if you're healthy. So if you're unhealthy, then you're looking at really a lot of just getting sick in time, which is not fun. So I know बहुत से लोग ये नहीं करेंगे या कराना चाहेंगे बिकॉज सब हस्पतालों से डरते हैं, और आधा वक्त हम इसलिए भी डरते हैं बिकॉज ये अगर हमें पता चल जाए कि हमारी तबीयतें ख़राब होनी, फिर तो हेल्दी होना होगा, तो लोग उससे भागते हैं. पर मैं गई और मुझे नीडल से बहुत डर लगता है, मुझे खून निकालने से डर लगता है, कैन्युला से बहुत डर लगता है. पर जो करना था वो कर लिया, और उसके बाद भी मेरे पास अच्छी मेरी पिक्चर आ गई कि अभी मेरी हेल्थ कैसी है और आगे किस तरह होनी चाहिए, कैसे होगी, और मैं ये रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी. ये एक प्रिलिमिनरी वीडियो है, अभी मैंने बस अपनी जर्नी शुरू ही की है, बट आई थॉट कि ये जो वेट लॉस अभी थोड़ा सा मेरा हुआ है मैं आपके साथ ये शेयर करूँ. I get you guys on track as well. Anyone who wants to do it with me, I would love it if you guys started and got inspired and did it alongside me. If you guys want me to do more of this, if you guys want recipes, if you guys want me to share, my exercise, and if you guys wanted me to share like my meal plan also, I know that's something that is really popular and people like it. But if you guys want me to do all of that, please comment below this video and tell me what you want to hear during this journey, so I can keep sharing with you guys. I'm going to do a health update every day, but every week, like I said, to just tell you guys कि क्या हो रहा है, कि जिस तरह होता जाए तो आप लोग साथ साथ देखते रहें. But I'm also going to, and every month I'm going to tell you कि कितना हुआ, etc. What's my progress, how I'm feeling. Other than the weight that I've lost currently, another great thing that I'm feeling is, क्योंकि हमेशा weight पे focus करते हैं कि weight गिरा है तो क्या हुआ है. Another great thing that I'm feeling is that I'm feeling more energetic. एकदम मेरी energy के levels higher हैं. अभी नूर की बीच में तबीयत ख़राब थी, मेरा corn removal था, कुछ मुश्किल इस तरह वक्त था जहाँ मैं काफ़ी स्ट्रेस थी, पर उसके बावजूद because I was taking care of my body, I was able to get through this time without really crashing, तो मेरे energy levels high हैं, more energy, I can run around with Noor a lot more. I'm feeling excited to just kind of, today I'm wearing a jean, I'm going to put up a picture of it on my Instagram if you guys don't follow it. I haven't fit into that jean in a really long time. And it was one of my big jeans actually at my fittest, so it's not my goal yet, but I'm getting there slowly. पर ये भी victories हैं, ये भी celebration है कि यहाँ भी पहुँचे हैं, तो इसको भी enjoy करना चाहिए. So I got dressed today for the video, I wore that jean, and I was like, okay, I'm slowly gonna get there. I'm not getting there today, and I don't need to, I don't want to, I don't have to, I'm not gonna push myself, I'm gonna get there slowly and get healthier. I don't really care about how I necessarily look. Like I said, right now I'm still happy about the way I look. Alhamdulillah, Allah ने हमें हाथ पैर दिए हैं, मेरी आँखें, मेरे कान, more than obsessing over how I necessarily look. But I also want to get fitter and healthier. First for myself, then for the people who love me, because they deserve that as well. They deserve me being my best version. So I'm focusing on myself. I've made this video for you guys. Please, like I said, comment box में अपनी सारी request भेजिएगा कि इस particular जो चीज़ें जो health के बारे में मैं share करूँगी, आप लोग क्या देखना चाहते हैं. I'm excited about starting this. I have started this journey. I didn't do like a video immediately because I wanted at least some time to go by before I just started to talk about the fact that I'm doing this, because I wanted to be in a stable place and know that I'm going to, do this properly. So yeah, I'm excited about sharing this with you. I hopefully just show you guys that I'm going to do it nice and slow, and that it's a process and take you guys through. Really excited to be talking to you guys after a really long time. Another thing I wanted to say, I didn't make a video separately for it, but thank you so much for 50,000 subscribers on YouTube. We literally just started end of Jan, and I can't believe we're already up to 50,000. I know it's a small number for many, but for me, each one of you, thank you so much. It
pushes me to make better content for the channel. हम different तरह के content try कर रहे हैं. We're seeing what you guys like, what you guys don't like. So if you like this particular video and you want to see more of this, guys, please comment. When you guys comment and like and share and subscribe, that is the fuel for this channel to give you more information, share more. I'm amazed by the feedback that I get. Please keep giving me your feedback. I'm looking forward to hearing from you, and see you guys soon. And subscribe. Bye.